Okay, now we are going to start some palaces, Haveli, and the monuments. One is Hawa Mahal of Jaipur. The structure was built in 1799 AD by Maharaja Savai Pratap Singh. He was so inspired by the unique structure of Khetri Mahal and built grand and historical palace. It was designed Lal Chand Ustad. It is unique 5 story and honeycomb of the beehive with the 953 small windows called the Jarukhas, and it was constructed in 1799 AD. The 5 stories 953 small window of the world famous building were constructed to provide the facility of the Queen Sharat Temple and Pratap Temple situated in the country yard of the first floor. Moti Dungri Palace, Jaipur. Moti Dungri in Jaipur is the small palace which is an imitation of the Scottish castle in the Rajasthan. This fort was the one of the occupied Maharaja Madho Singh, who was the restrained here. It is also known the while home to Maharani Gayatri Devi. It is Moti Dungri Palace in Jaipur, and afterward it was used by the venue of the innumerable parties attended by the top society. The entry is prohibited as the Maharani Gayatri Devi used to reside at the foot of the Moti Dungri fort of Birla Temple. Takht Shahi Temple and the Ganesh Temple situated there. Ramgarh Palace, that is King Savai Mansingh as a guest house for state higher officer and VIP guest. So that is Ramgarh Palace, and this palace was facilitating the kind of modern amenities and luxurious palace. So there is a Bagh of Kesar Badaran is also there, and presently world famous Ramgarh Palace hotel is also there. Amber Palace of Jaipur. Amber Palace constructed King Man Singh 17th century, constructed of red sandstone and the attractive opulent palace. So hall of public audience and Diwan Khas, hall of private audience, and Sheesh Mahal Jai Mandir is also there. So the palace was the residence of the Rajputs Maharaja and the family. At the entrance to the palace near the Fort Ganesh Gate, there is a temple of dedicated to Sheela Devi goddess Chaitanya cult, which was the Raja Man Singh. When he defeated the Raja Jessore of Bengal, he taken that from that palace. Now Kesar Bagh and Mauta Lake is situated near the Amber Palace. And Jal Mahal, Jaipur. This palace was constructed by Maharaja Savai Jai Singh, situated the center of the Mansagar Lake, Jaipur, Amber Road. Sisodia Rani Palace, that is also Savai Jai Singh 1728 AD. This second wife of Sisodia, Queen Chand Kumari. So he just built up that palace. Integral wall of palace are painted with the painting of Radha Krishna and the mural paintings and hunting scenes. Now next palace is the Sirohi Palace of Alwar. Silicate Palace of the Alwar. This is the 6 storied palace Queen Sheela, which was now famous motel of the Rajasthan Tourism Development Corporation. And Vijay Mandir Palace, that is constructed King Jai Singh at Alwar. Beautiful lake situated here, and that is Sita Mata Temple is also near the Vijay Mandir. And Sariska Palace of Alwar 19th century में महाराजा जय सिंह ने बनवाया था. The imposing palace served as a hunting lodge for the Maharajas for year to come. It has now been converted into the heritage hotel based on the total 100 acre its facet and green lawn even in the middle of Rajasthan. So we can see next is the Jagmandir Palace of Udaipur. Construction started Maharaja Amar Singh first and completed Maharaja Karan Singh. So Jagmandir Palace situated on the island of the parallel to Jagnivas Mahal, and there is a Pichola Lake, circular dome, water tank, nearly garden area is constructed here, and Taj Mahal Khurram took refuge here. Sajjangarh Palace of Udaipur, it was construction was started the Maharaja Sajjan Singh, completed Fateh Singh. It was also called the Monsoon Palace, that is the Sajjangarh Palace of Udaipur. Next is Raj Mahal Udaipur, situated the Pichola Lake. Historians has also called with the name of the Windsor Palace of Rajasthan, that is Raj Mahal of Udaipur. And Sheesh Mahal, Krishna Mahal, Moti Mahal, Manak Mahal, Glass Column, Kishan Vilas is also building. Jagnivas Palace, Lake Palace of Udaipur. Jagnivas Palace was constructed the Maharaja Jag Singh, and Pichola Lake was near the Dola Mahal
constructed of marble. It is very famous for the ancient palace. Jagnivas Mahal, that was a lake palace of Udaipur. Umaid Bhawan Palace, Jodhpur. It was built the Maharaja of Umaid Singh for year 48. It was known for its the Chittar Palace and stone used the construction, and museum, theatre and central hall. Umaid Bhawan, that is in Jodhpur, and Jagnivas Palace, that is in Udaipur. Now Rani Ka Bagh Palace, that is also in Jodhpur and Rajasthan. Another tourist spot visit to the Jodhpur. The queen of the Maharaja Jaswant Singh first and Hardiji built this. It was situated near the Raika Bagh Palace of the railway station. Famous Raika Bagh Palace, India was constructed 1663. It was among the favorite palace of the Jaswant Singh. Most of time stayed the and Raika Bagh. Now Swami Dayanand Saraswati came to Jodhpur. The arrangement for this public audience were made in the public ground of this palace. He gave the sermons and Jaswant Singh used to listen to Swami Dayanand in this palace. Badal Niwas and the Jawahar Niwas in Jaisalmer. So it was the constructed the Maharaja Jawahar Singh residence of Maharaval Jaisalmer. Jawahar Vilas and Badal Vilas among the extraordinary pieces. 5-story Tajia Tower, that is unique example. Badal Vilas. Deeg Palace of Bharatpur. Deeg Palace is the Bharatpur, Rajasthan was built. The luxurious resort of Bharatpur and elaborately stone slabs and marble jalis are also there. Now next one is a Keshav Bhavan, the monsoon pavilion of single storied and the edified has 5 arch along the side which seems to divide into the parts. And Uday Niwas Palace, that is in Dungarpur. This is constructed the Maharaval Uday Singh at the coast of Gape Sagar. Gape Sagar is also in Dungarpur. It is an excellent example of stone art and the constructed white marble and blue stone. Juna Mahal, that is in Dungarpur also. So Juna Mahal is 750-year old and that was laid the Rawal Veer Singh and the Vikram Sambandh, and that was rectangular column and the Chhajja and the windows are also there. Next is Gad Bhavan Palace, that is Jalawad. It was constructed of 1838 by the Jala Mahal Man Singh, and this palace is rectangular and consists of 3 doors. So Gad Bhavan, that was in Jalawad. Gad Bhavan Palace, that is in the Jalawad, and that is Dari Khana and the Janani artistic windows are also there. The Khetri Mahal and Junjunu, that was the multi-storied palace decorated artistic window, and Khetri Bhopal Singh. The Kasht Prasad wooden palace of Jalawad, and Ablimini, that was a Kota. Kota was Mukund Singh Hada was constructed beautiful palace, that is Ablimini. Rang Mahal, that is in Bundi, constructed Maharaval Bundi. Chhatrsal Mahal, famous for his wall painting, and Chitrashala Bundi, that was the Mahara Umaid Singh Chitrashala constructed the Bundi Royal Palace. Haveli of wall painting and Rangnathji, Rao Leela and teasing Gopi and Ramayana. Lalgarh Palace, that is in Bikaner. So insistic carving, red sandstone, and 100 rooms are one of grand library constructed King Maharaja Ganga Singh, and that was memory of Lal Singh. Sunehri Koti Tonk, that was the Tonk, and gold magnificent hall Tonk, Indian Rajasthan. This hall is the old palace complex. Wall of the ceiling are one of the expansion, and there is a mirror work is also there. Okay, now next one is Sukh Mahal, that was in Bundi, Maharao Vishnu Singh, and Padmini Mahal Chittorgarh. Janana Mahal Jodhpur, Gulab Mahal Kota, Moti Mahal and Phool Mahal, that is Birla Mahal, that और बिजला महल जोधपुर. मुबारक महल जयपुर में है. एक थम्बा महल जोधपुर में है. माल्या पैलेस जाली कुंभलगढ़ में है. स्वरूप निवास सिरोही में है. 9 पैलेस नाहरगढ़. गोपाल भवन डीग भरतपुर में है. सरदार निवास, दैट वाज भीलवाड़ा. एंड छत्र विलास कोटा. बदनौर जो है आसिंद में है. मुबारक महल टोंक में है. विनय विलास अलवर में है. एक थम्बिया महल भी है, ठीक है. देन बादल महल डूंगरपुर. खुश महल उदयपुर. अनूप महल बीकानेर. केसर विलास महल सिरोही. राजमहल, दैट वाज टोंक. एंड बिजलोई जोधपुर. एंड सुनहरी कोठी, दैट इज इन टोंक.
Now lots of Havelis are also there in Rajasthan. So Haveli architecture is similar to the Indian architecture, and Haveli were constructed mainly by the money lenders and rich businessmen. Influence of Iranian architecture. This is one of the major main door of the rooms, left right side. There is a chowk, courtyard, and Marwad Haveli are famous for its stone and jali work. Hadoti Haveli artistic work, and Shekhawati famous for the fresco painting. Okay, now the Haveli of Jodhpur. So that is we can say Bade Miyan ki Haveli, Pushpa Haveli, Pokhran Haveli, Rakhi Haveli, Pal Haveli, and Pachiya Haveli. Haveli of Motilal, Amarchand Kothar, and Sangidas, Phoolchand, Lal Chand, that all. That is जोधपुर. हवेली ऑफ जैसलमेर. जैसलमेर में जो हवेलीज़ हैं उनके भी नाम है पटवो की हवेली, नथमल की हवेली एंड सलीम सिंह की हवेली. ये जो हवेली है दैट यहाँ पे इस्लामिक और राजपूताना दोनों आर्किटेक्चर का इफेक्ट है. ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा, एंड दिस ब्यूटी वाज हवेली वाज ट्रूली अनमेच्ड. द स्पेक्टेकुलर आर्किटेक्चर है, ये भी क्रिएटिविटी है. ठीक है. पटवो की हवेली जो थी दैट इज़ बेसिकली इंटरेस्टिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर, and this is because of two things. First was the first Haveli was a Jaisalmer, and second not single Haveli was there, and there is a beautiful coordination of Hindu and mention the brocades and merchants. The name of being given the probably because of the family deal thread of golds and silver used the embroidering dresses. Okay, now next is Salim Singh की हवेली. तो ये सालिम सिंह जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जैसलमेर स्टेट व्हेन देयर वाज 9-story हवेली कंस्ट्रक्टेड बाय हिम, एंड दिस 7 कंस्ट्रक्टेड ऑफ द स्टोन and 2 constructed by the wood. Now next one is Rang Mahal, and the Sheesh Mahal is also there. Nathmal ki Haveli that was commissioned serves the residence of Diwan Nathmal, and the Prime Minister of the Jaisalmer and Maha Rawal commissioned the construction of this Haveli. The architecture of Haveli were Hathi and who was happened. There is a very interesting story regarding the construction that the two brothers starting building different facet of Havelis, and it was Jaisalmer के अंदर है, and there was 2 elephant made yellow stone. These are life size replica. कुछ पेंटिंग्स है, पिक्चर्स हैं बहुत सारी. Okay, and drawings, modern amenities are also there. Okay, now next one is the Haveli of Bikaner. All the Haveli of Bikaner are constructed by the red sandstone and geometrical carving. Mughal, Kishangarh and European effect है यहाँ पे. And बचवातों की हवेली is in the Bikaner, and the मोहता, मुंद्रा, रामपुरिया हवेली, गुलचा and ओसवालों की हवेली and माहेश्वरियों की हवेली. So that is in Bikaner. And Haveli of Shekhawati, that is Roop Niwas, Bhagat, Podar and Bagheria, Jalan. So Roop Niwas and Bhagat and Podar and Bagheria and Jalan, that is in Shekhawati. And Bhagwato की हवेली and the Navalgarh is also in the Shekhawati. हवेली of झुंझुनू. झुंझुनू में है सेठ हीरालाल, बनारसी लाल की हवेली, सागरमल लोहिया and मोहनलाल and हरि प्रसाद, रामदेव, चोखानी, रामनाथ, गीता, विश्वनाथ, गोयनका. ये सारी हवेलियाँ जो हैं, मंडावा, सराफ, दैट ऑल आर इन झुंझुनू. एंड हवेली ऑफ सिक्कर. सिक्कर में पहले भी बताया था ताराचंद की हवेली, राम गोपाल पोदार की हवेली एंड घनश्यामदास पोदार, रामनिवास खेमका की हवेली एंड नंदलाल देवड़ा की, कन्हैयालाल गोयनका. चूरू के अंदर है, चूरू में है हवा महल, हवेली ऑफ रामविलास एंड हवेली ऑफ मंत्री, हवेली ऑफ कन्हैयालाल बागला एंड हवेली ऑफ झालावाड़. झालावाड़ में जो हवेली है वो है काले बाबू एंड सत खान एंड गुलजार दीवान साहब. हवेली ऑफ जयपुर. जयपुर में जो हवेली है दैट इज़ पुरोहित की हवेली, खवास की हवेली एंड दाबाई जी की हवेली, रत्नाकर की हवेली, नाना जी की हवेली. एंड मॉस्क जो हैं, दरगाह ऑफ मीर साहब बूंदी. दरगाह ऑफ मीर साहब लोकेटेड द हिल ऑफ द गेप सागर ऑफ बूंदी. एंड मकबरा ऑफ द अब्दुल्ला खान अजमेर. मकबरा ऑफ द अब्दुल्ला खान लोकेटेड अजमेर, एंड दैट इज़ मकबरा अब्दुल्ला खान का जो मकबरा है दैट इज़ इन अजमेर. जामा मस्जिद दैट वाज इन भरतपुर मॉस्क है. ठीक है, तो भरतपुर में जामा मस्जिद है. एंड यहाँ पर दरगाह ऑफ सरवार है, सरवर की जो दरगाह है दैट इज़ इन अजमेर.
एंड यहाँ पे एवरी ईयर यहाँ पे वर्शिप करने लोग आते हैं। फ़खरुद्दीन की भी बोलते हैं हम इसको। मेजर टॉम जो है सैयद फ़खरुद्दीन गलियाकोट है, जो कि डूंगरपुर में है। ही वॉज अराइव द गलियाकोट आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द मैनी पैलेसेस ऑफ गलियाकोट। हिज मेजर टॉम सिचुएटेड फेमस वॉज द दोड़ी बोहरा सेक्ट एंड गलियाकोट वॉज द कैपिटल ऑफ द परमार एंड डूंगरपुर। और मजनू लोवर की मजार है, टॉम्ब है अनूपगढ़ में। तो टॉम्ब ऑफ मजनू सिचुएटेड द अनूपगढ़। इट इज़ अज्यूम द मजनू अराइव द विलेज ऑफ द लेला। नाउ टॉम्ब ऑफ द सेंट अब्दुल्ला पीर। अब्दुल्ला पीर जो हैं वो बांसवाड़ा के हैं। सिचुएटेड द भगवानपुरा बांसवाड़ा टॉम्ब मुस्लिम अब्दुल्ला पीर है यहाँ पे। दरगाह मॉस्क ऑफ द कबीर शाह करौली। कबीर शाह की तो करौली में है, ठीक है। और नेक्स्ट है दरगाह ऑफ द छालपीर शाह चित्तौड़ में है। छालपीर शाह की चित्तौड़ में है, उर्स बढ़ता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। दैट इज़ संस्कृत कॉलेज वाज कंस्ट्रक्टेड। हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर एंड बीसल देव जो चौहान थे उन्होंने यहाँ पे रूल किया था पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मॉस्क बना दिया। नाउ दरगाह ऑफ शक्कर पीर बाबा इन द झुंझुनू and that is people of all community come at the Shakkar Pir Baba of Junjunu. दरगाह ऑफ द हमीदुद्दीन नागौरी दैट इज़ इन नागौर एंड दैट इज़ येलो सैंडस्टोन से बनी है। दरगाह ऑफ द हजरत दीवान शाह दैट वाज कपासन एंड ये 40 किलोमीटर वेस्ट से है चित्तौड़। दरगाह ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है। एंड यहाँ पे देग होती है। बिगर देग वॉज गिफ्टेड बाय अकबर, स्मॉलेस्ट देग गिफ्टेड बाय बादशाह जहांगीर। मेन मेजर टॉम शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कंस्ट्रक्टेड सुल्तान मांडू गयासुद्दीन खिलजी। सो मेन एंट्री गेट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय निजाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली, ठीक है। नाउ टॉम्ब ऑफ अकबर अजमेर में है, ठीक है, आमेर में है। ऊषा मस्जिद जो है वो हमारी भरतपुर में है। जामा मस्जिद भरतपुर में है। दरगाह पीर दूल्हे शाह जो हैं वो पाली में है। दरगाह शक्कर बाबा वो हैं झुंझुनू में। टॉम्ब ऑफ मलिक शाह जालोर में है। मीठे शाह की गागरोन में है। बढ़िया दरगाह जो है वो आसिंद में है। मॉस्क ऑफ अलाउद्दीन जालोर में है। एक मीनार जो है जोधपुर में है। इधर ईदगाह जो है जयपुर में है। नालियासार मॉस्क नागौर में है। दरगाह ऑफ हमीमुद्दीन दैट वाज नागौर एंड टॉम्ब ऑफ द गुलाब खान जोधपुर। टॉम्ब ऑफ अब्दुल्ला खान अजमेर एंड मस्तान बाबा दैट वाज पाली। दरगाह ऑफ द मादीन शाह ऑफ द माधोपुर। दरगाह पीर हाजी निजामुद्दीन दैट वाज किशरी पैटर्न। दरगाह ऑफ द गाबी पीर दैट वाज द जहाजपुर भीलवाड़ा। और दौलत खान दैट वाज फतेहपुर एंड टॉम्ब ऑफ द सेंट मलिक दैट वाज जालोर। अब यहाँ पे म्यूजियम्स बनाए गए हैं बहुत सारे। विजय स्तंभ दैट इज़ इन चित्तौड़गढ़। सो विजय स्तंभ वॉज द इम्पोर्टेंट कॉलम और टावर्स हैं जिसमें विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। राणा कुंभा ने इसको 1448 AD में बनाया था टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द कंबाइंड आर्मी ऑफ मालवा एंड गुजरात द महमूद खिलजी एंड द टावर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। देयर वाज 9 stories and विश्वकोश ऑफ द भारतीय मूर्ति कला। While the Vijay Stamp is the common name, it is the technically is the Kirti Stamp and the inscribed uppermost story. And there was a Chittor, their deeds and the ascribed Rana Kumbha and court scholar Atri and Mahesh. The name of the architect of the Sutradhar Jeta and his 3 sons who assisted the Nana, Punja and the Poma are the carved the 5 floor of the tower. तो नापा पुंजा एंड पोमा के बारे में भी लिखा हुआ है। And the Vijay Stamp is remarkable example of the religious pluralism of Rajput. The topmost story जो है वो जैन गोडेस पद्मावती राणा कुंभा के बारे में भी है। एंड यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है जो टॉप इसकी जो ऊपर की जो बिल्डिंग है वहाँ। कार्व द अरेबिक 9 times 9 बार लिखा हुआ है। एंड ऑन द थर्ड स्टोरी जो थर्ड स्टोरी है 8 times ऑन द 8th स्टोरी, ठीक है। एंड कीर्ति स्तंभ जो है दैट इज स्तंभ डिवोटेड टू द फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ। स्टोरीड 75 feet टॉल है। कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय जीजा ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था कीर्ति स्तंभ को। विजय स्तंभ जो है दैट इज तन्नोट जैसलमेर। इट इज़ मॉन्यूमेंट दैट वाज एस्टेब्लिश इन द मेमोरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ द इंडियाज पाकिस्तान बैटल के बीच में हुआ था। तो वो विजय स्तंभ जो तन्नोट जैसलमेर में भी है उसको इंडिया पाकिस्तान बैटल हुआ था तब 1965 तक बनाया गया था। और धर्म स्तूप दैट इज़ इन चूरू रिलीजियस टॉलरेंस के लिए इसको बनाया। फेमस फ्रीडम फाइटर स्वामी गोपाल दास ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था धर्म स्तूप इन चूरू। नाउ छत्रीज आर एलिवेटेड डोम होती हैं शेप पेविलियंस होती हैं
The Chhatris means canopy or umbrella. In the two different things, the usual more widely understood meaning of the memorial. Okay, so the word Chhatri is also known refer to the small pavilion and mark the corner and the roof of the entrance of the major building. These pavilion are the purely decorative होती हैं, but classic, displaying the status and wealth of the owner. Chhatris are commonly used to depict the elements of the pride, honor of the Maharaja and Rajput architecture. And the most notable surviving example today are to be found in the Humayun tomb in the Delhi and Taj Mahal of Agra. Okay, so now there's Chhatri of the King Mansingh, that was Chhatri of the King Mansingh famous world. Chhatri of the Goradai, that was the Ajit Singh की memorial में. Chhatri of the Musi Maharani, that was Chhatri of 80 pillar Alwar, and that was Queen refused to perform the Sati, and Musi was performed after there was a Chhatri of white marble 80 pillar. Chhatri of 84 pillar, that was Bundi, एंड छतरी ऑफ द गंगाबाई गंगापुर भीलवाड़ा में बनाई गई है. ठीक है. नाउ ईसरलाट जो है दैट इज सरगासुली भी कहते हैं, दिस इज इन जयपुर. सो ईसरलाट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई ईश्वरी सिंह, सेकेंड सन ऑफ किंग ऑफ जय सिंह, एंड इन द फॉर्म ऑफ विजय स्तंभ इन द जयपुर, दैट इज सरगासुली. सो 1749 में इसको बनाया गया. वेली टावर ऑफ द घंटा घर ऑफ कोटा, दैट इज वेली टावर. And Kota Gantaghar was constructed by during the reign of the Maharaja Kota of the Amit Singh II. It was the name the political agent of Kota Valley is constructed the most modern building of Kota. Royal Gantaghar, that is in Dholpur. So Shahi Royal Gantaghar है, established the Tomar Rajput king and Dawal Dev 8th century में in Dholpur. 150 feet watch tower is constructed and the Nihal Singh Dholpur during this. It was also the Nihal Tower and it was made of the 7 metals and it is sound up to 9 kilometer. Now the Gantaghar of Bikaner, that is first watchtower of the Bikaner, was constructed by the 5th ruler of the Bikaner. Chhatri of Bohra, that was Galiakot. Chhatri of Bohra Karoli, and Baradari, that was Badi. Kesarbagh, that is Dholpur. Amar Jawan Jyoti Jaipur. Chhatri of Rupadai जोधपुर. छतरी ऑफ गोरादाई जोधपुर. दीप स्तंभ, दैट वाज अर्थुना बांसवाड़ा. छतरी ऑफ केसरबाग बूंदी. छतरी ऑफ स्मारक, दैट वाज बाड़मेर. छतरी ऑफ द कीरत सिंह, दैट वाज मेहरानगढ़ जोधपुर. एंड छतरी ऑफ किंग ऑफ जोध सिंह, दैट वाज द भीलवाड़ा. छतरी ऑफ अनटेड अजमेर रिलेटेड टू द जैन दिगंबर सेक्ट. एंड छतरी ऑफ द जयप्पा सिंधिया, दैट वाज नागौर. Monuments of the territory Bikaner and Kunwar Prithviraj Kumbhalgarh. Chetak Smarak, that was the Udaipur, and Chhatri of the Kana Naruka Tonk, and the monuments of Hakim Khan Suri, that was Udaipur. Chhatri of the Jala Mana, that was the Karoli, and Raidas Chittor, and Amar Singh Rathore, that was the Pond है नागौर में. Chhatri of the Bharat family, that was the Shahpura, and Shekhawati, that was the Junjunu. Then some places, Talab Shahi Lake, that was in the Dholpur, and Step Wall of Amarthun Bundi. Step Wall of Jachedi, that was Jodhpur. Sikra is the Badi Dholpur, and Khitans, that was Junjunu. Amar Sagar Kuwa, that was Bikaner. Bab Talab, that is Jaisalmer, and Furlo Talab, that is Jodhpur. Artistic Well Isarda, that was Savai Madhopur. Steep Wall of Satvis, that was Chittorgarh. Mandonikini Kundi, that was the Sirohi. And Jawar Vilas Mahal in Jaisalmer, and Karn Mahal, that is Bikaner. Noor Mahal in Bharatpur. Jal Mahal, that is in Bharatpur. Ravan Mahal, that is in Kota. रूठी रानी महल इन भीलवाड़ा, इसको मैनाल के अंदर बोलते हैं. एंड कन्वपाड़ा महल, दैट इज चित्तौड़गढ़. विजय मंदिर महल अलवर. अनूप महल बीकानेर. राखी महल जोधपुर. बुलानी महल जोधपुर. माल्या महल, दैट वाज कुंभलगढ़. एंड मुबारक महल, दैट इज टोंक. गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़. पुष्पक महल रणथंबोर. महल ऑफ कानपुर, दैट वाज द बाड़ी. एंड सुपारी महल, दैट इज रणथंबोर. एंड खट्टर महल, दैट इज चित्तौड़गढ़. जगमोहन महल कोटा. नारायण विलास महल जयपुर. निकुंभ महल अरवर. एंड मृयंग महल रूप. गोपाल महल डीग भरतपुर. हमीर महल रणथंबोर. एंड तुलाती महल जोधपुर. पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़. कुंभा महल चित्तौड़गढ़. जनाना महल चित्तौड़गढ़. नवलखा महल, दैट इज झालावाड़. एंड रानी महल, दैट इज
Dholpur. So this all about the art and architecture of the Rajasthan.